Fine. In last lecture, we have discussed slope deflection equation. Fine. So now today we are going to start examples based on slope deflection method. Okay, slope and deflection method. So example number 1. Analyze continuous beam. So on in below figure. Okay. Now in data, sometime given that also calculate support reaction and shear force diagram and bending moment diagram also. Okay. So in that case, basically analyze. What is the meaning of analyze? Analyze का meaning होता है you have to calculate support reaction and also draw shear force diagram and bending moment diagram. Is it clear? What is the meaning of analyze? You have to draw support reaction as well as calculate. So you have to calculate support reaction and also draw shear force diagram and bending moment diagram. Okay. So let me first of all draw the beam. Data is given like this. A, B, C is a continuous beam. Support A and support C are fixed one. Support B is a roller. Okay. So now intermediate support basically given. Okay, B is your intermediate support, and this is suppose your point D. Okay, length between A to B, that is a 2 meter. Say length between D to B, that is also 2 meter. Length between B to C, that is a 6 meter. Okay, EI, A to B, EI equals to I. I is your moment of inertia, E is your modulus of elasticity. Right? And in between B to C, your EI equals to twice EI. So we can say that there is a change in a cross-sectional dimension of beam. Yes or no? From B to C, there will be a change in cross-sectional dimension. Right? So now, to analyze any kind of the slope deflection method or any kind of the continuous beam by using slope and deflection method, first of all, we need to calculate friction moment. Clear? So first of all, we will calculate friction moment. So I am writing here step number 1. Calculation of fixed end moments. Okay. So now, to calculate friction moment, whatever span is given in data, we will consider separately. Now, please tell me how many number of span here? कितने span दिए हुए data में? दो span. Okay, one is a A to B, another is a B to C. Now, I am drawing the sketch for your basic understanding only. Okay, this sketch does not require to draw in examination, or once you are familiar with method, it is not required to draw. Right? So I am considering span AB. To calculate friction moment, we will consider each and every joint where support is provided considered as a fixed one. Right? So joint B also considered as a fixed. This is the procedure to analyze the structure. So point B also considered as a fixed, and AB span is subjected to central point load. First वाला case last lecture में हमने discuss किया था. This is A, this is B, this is a D. Length is 2 meter is given. So fixed beam subjected to central point load. उसके लिए we have for that we have a friction moment equation MFAB, that is equals to minus WL by 8. I hope it is clear to all of you. What is your W? W is a 40 minus 40 into length. L is a 4 meter total length of the AB beam. That is a 4 meter divided by 8. Please tell me what is answer. कितना आंसर आएगा? minus 24. Yes. Okay, minus 20 या 24.
20 आएगा शायद, हाँ -20 सर, -20 ओके -20 किलो न्यूटन मीटर। ओके हमने ऐसा भी कुछ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, राइट हैंड साइड का मोमेंट क्लॉकवाइज रहेगा। सो MFAB दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, दैट्स द रीजन -1। MFB दिस इज योर MFB दैट इज राइट हैंड साइड वाला मोमेंट है, दैट इज अ क्लॉकवाइज। चलिए लेट मी कैलकुलेट MFB plus WL by 8 fixed moment. So we will get plus 40 into 4 divided by 8. So we will get plus 20 kilonewton meter. I hope it is clear to all of you. Now next, for span BC, same procedure. Consider the BC span separately and draw fixed moment or calculate fixed moment. Clear? So this is your BC span. It is subject to uniformly distributed load throughout its span. Value is a 20 kilonewton meter. Length is 6 meter. So this is your point B. This is your point C. Again, left side wala moment anti-clockwise. So MFBC will be anti-clockwise. MFCB will be a clockwise. So we will get MFBC that should be equals to minus WL square by 12. I hope it is clear to all of you. So we have W20 L equal to 6 meter. So minus 20 into 6 divided by 12. Sorry, 6 square. So please tell me what will be your answer. -60. Yes, minus 60. Fine. So minus 60 kilonewton meter. Your moment for MFBC. Similarly, we can calculate MFCB. That should be equals to plus WL square by 12. And that value will be a plus 20 into 6 square divided by 12. I hope it is clear to all of you. And that is a plus 60 kilonewton meter. Itna clear hai students? Please confirm me. Is there any question till this step? कोई भी एग्जांपल हो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. First step is to calculation of support reaction. Fine. Your first step will be a calculation of support reaction. कोई भी मेथड हो, either slope deflection method or moment distribution method. Now next step, that is a step number 2. So for a step number 2, we will write down or we will write a slope deflection equation for each end. Okay. So slope deflection equation. For each joint. Okay, so for a joint A, first of all, we are writing for a joint A. So for a joint A, we are at point A, that is your AB. That's the reason MAB. That should be equals to minus MFAB. We have already discussed why this is negative because of anti-clockwise. Now, if you do we can practice like this also. We will write MFAB positive, but we will put a value with sign. Is it okay? MFAB. पता चला क्या बोल रहा हूं मैं? We will put a sign. Okay, later on. MFAB plus 2EI divided by L multiply by. We are currently at joint A. That's the reason twice theta A. Far end is a B. That's the reason theta B. Minus 3 delta divided by L. I hope this equation is clear to all of you. Clear है? Please confirm me. ये clear है सबको? Put all the values. Now from this geometry, what is the value of theta A? Please tell me, students. What is the value of theta A? Theta A कितना बोल सकते हैं? 0 sir. 0. Yes. Due to fixed support, we can say that theta A equal to 0. Right? Put value of MFAB and value of theta A. Now again in data, is there any sinking or deflection is given? In data, is there any sinking or deflection is given? Tell me. No sir. No. That's the reason delta is also 0. Okay, so we can say that theta A should be 0 and delta equals to 0. Right? So ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, ये वाला टर्म आपका 0 हो गया. I hope it is clear to all of you. Put other values here. दूसरी value place कर दो चलो. So your value for MFAB, that is a minus 20.
So we can say that MAB that should be equals to minus 20 plus 2EI divided by 4 multiplied by theta B directly लिख सकते हैं. So we can say MAB that should be equals to minus 20 plus 0.5 EI theta B. I hope it is clear to all of you. This is your equation number A. Say this is equation number A. Fine. Similarly, add joint B now. Now we will write equation for joint B. For a joint B, we have two members, yes or no, MBA and MBC. So we will write separate equation for MBA and separate equation for MBC as similar to joint A. So first of all, writing down for MBA, that should be equals to, चलिए MBA लिखते हैं. MBA that should be equals to same procedure MFBA plus 2EI divided by L multiply by, for B joint that's the reason twice theta B plus theta A minus 3 delta by L. Again we have similar condition. Theta A is your fixed support, that's the reason slope at point A equal to 0. No deflection is given in data, that's the reason delta is also 0. So we can say that theta A should be equal to 0 and delta equal to 0. Okay, so now put all the values, all relevant values. So we can say MBA that should be equals to plus 20 plus 2EI divided by 4 multiply by 2 theta B. Yes or no? So we will get 20 plus EI theta B. MBA equals to 20 plus EI theta B. I hope it is clear to all of you again. This is equation number B. Similarly, we will writing down same equation for MBC. That should be equals to MFBC plus 2EI divided by L. Again, for a joint B, that's the reason twice theta B plus theta C minus 3 delta divided by L. I hope it is clear. Again, theta joint C is again a fixed one. That's the reason slope at C should be 0. Okay, and no deflection is given. That's the reason delta is 0. So we can write here theta C equals to 0 and delta should be equal to 0. I hope it is clear to all of you. Chaliye next, put all the values. So we can say MBC that should be equals to minus 60 plus 2. Now see here, what is the value of EI for BC in data? Tell me, EI की कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे? EI equals to 2EI लिखा हुआ है. That's the reason you have to place I equals to 2. So we can say that 2 into 2EI divided by 6. Yes or no? Multiply by twice theta B. I hope it is clear to all of you. Sometime in an examination or in some books also written I and 2I. That's the same property, right? So we can say that MBC that should be equals to minus 60 plus 4 by 6 4 2 into 2 4 into 2 8 8 by 6 कितना आएगा बोलिए? What is the value of 8 by 6? One point 333 EI theta B. Okay, so this is your equation number C. Fine. Now please student keep your calculator in 3 digit. Okay, आपका कैलकुलेटर 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए. इसके लिए क्या करना है? प्रेस मोड की ऑन के बाजू में फ्रॉम टॉप ऑफ द कैलकुलेटर सेकंड की फ्रॉम राइट साइड मोड वाला बटन को 3 बार प्रेस कीजिए. 3 या 4 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा. आपको फिक्स करके फंक्शन दिखेगा. 1 नंबर इज अ फिक्स and fix your calculator to 3 digit. So your answer will be always in a 3 digit. Okay, so do this exercise by yourself. Chaliye next, for a joint C we will apply same condition. For a joint C
for a joint C, MCB, that should be equals to MFCB plus 2EI divided by L multiply into twice theta C, because we are at joint C, plus theta B minus 3 delta by L. I hope it is clear. Again, your joint C is a fixed one. That's the reason slope of theta C, that should be theta C should be 0. No deflection is given. That's the reason delta is 0. Put other values. What is the value of theta MCB? MCB equal to 60 kN/meter. Put that value. So we will get MCB, that should be equals to plus 60 plus 2 into 2EI divided by 6 into theta B. So we will get MCB, that should be equals to 4 by 6. Tell me what is the value of 4 by 6? One. Why 1? 0.67. 0.667, right? 0.667 EI theta B. I hope it is clear to all of you. So this is your equation number D. So now we are interested to calculate end moments of your beam. We are interested to calculate what is the value of MAB, what is the value of MBA, what is the value of MBC, and what is the value of MCB. Clear? So we have 4 equations. One equation is MAB, ये वाला equation. In that equation, theta B is unknown. Second equation is your equation number B, MBA. In that, again, theta B is unknown. Third equation is MBC. Again, theta B is your unknown. And fourth equation is MCB. Again, theta B is unknown. Yes or no? If we are able to calculate theta B, can we able to calculate end moments? Yes or no, students? If we are able to calculate theta B, we are able to calculate end moments. Yes or no? पता चला क्या बोल रहा हूँ मैं? Are you able to understand? Yes, sir. Okay, so now for that we have to apply some equilibrium condition. So step number 4 is apply equilibrium condition. Okay, चलो कैसे apply करना मैं आपको सिखाता हूँ. Step number 4, apply equilibrium condition. Apply equilibrium conditions. Okay, so now from beam we can say that to make your structure in a stable condition, can we say that for a joint B, MBA and MBC must be equal and opposite? Yes or no? MBA and MBC must be equal and opposite? Yes or no? Yes, sir. Okay, now actually point B is a roller support, but can we say that your joint B, that is a intermediate one? Yeah, na? Joint B is an Yes, intermediate sir. one. Now just think continuous beam. Okay, in actual structure. So in actual structure, can we say that if we are considering any plan view, okay, in that case we are we can see like just like this. Just see here. Suppose this is I am drawing a random plan view. You are able to get such kind of information. Yes or no? Column ऐसे दिखेगा आपको. Whatever dimension is given, whatever shape is given, either rectangle or circular, depending on requirement. Yes or no? कई बार आपको आप लोग ऐसे भी देखते हैं, this and this. Yes or no? Agree हो? All of you are with me? Okay, जो भी मैंने यहाँ पे राउंड किया है, that is nothing but your column, and that is nothing but your support. Yes or no? So now suppose we are considering this joint. Actually from condition of support, that is a roller support, and as we have discussed in last lecture, roller support can't resist any moment, but joint B is an intermediate one. Yes or no? Yes or no? Joint B is your intermediate one. So it will actually carry a moment by equilibrium conditions. So at that joint, summation of all the moments must be equal to 0. Is it clear or not? Please confirm me. For an example, if we again move to this plan, so for this joint, moment coming from this member, and this member, and this member, having some equilibrium conditions, that is nothing but algebraic summation of all force will be a 0. Is it clear or not?
इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि ये वो जॉइंट मोमेंट रजिस्ट नहीं कर रहा है. It will carry a moment, but in a equilibrium conditions. Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. Understand, sir. Okay, fine. So this is some basic explanation of intermediate junction, how it will carry a moment. Fine. Chalo. Let me apply equilibrium conditions. So can we say that for at a joint B, MBA plus MBC, that should be equal to 0. It is nothing. MBA, as we have discussed, MBA equals to minus MBC. As we have discussed, as I have explained to all of you, moment at MBA and MBC must be in equilibrium condition. So we can say that MBA and MBC should be in a equal and opposite nature. So from that, can I write like this? MBA plus MBC equal to 0. Yes or no? Yes or no? Please confirm me. Fine, na? Okay, so now we have already calculated MBA. Put value of MBA. MBA is nothing but 20 plus 20 plus EI theta B. MBA, just a minute. MBA, yes, 20 plus EI theta B. 20 plus EI theta B. What is value of MBC? Again, we have already calculated. That is the minus 60 plus 1.333 EI theta B. Minus 60 plus 1.333 EI theta B, that should be equal to 0. So we will get 2.333 EI theta B, that should be equals to 40. सामने जाके प्लस हो जाएगा. Yes or no? So please tell me what is the value of theta B? 40 divided by 17.17 divided by EI. Yes, 40 divided by 2.333. So we will get 17.17 by 17.15 जैसा कुछ आ रहा है. So we can say 17.17, sir. 17.15 चलेगा. 1517 दोनों चलेगा. Fine. Divided by EI. This is our value of the theta B, that is nothing but slope at theta B. Yes or no? So say this is the equation number 1. Put this equation number 1 in each equation A, B, C, D. Yes or no? Clear? This equation number 1 यानी कि value of theta B को हम equation A, B, C, D में place कर रहे हैं to calculate slope at B, to calculate end moments. Fine. So now please calculate separately and give me answer. चलिए, MAB, that should be equals to minus 20 plus 0.5 EI theta B. चलिए, minus 20 plus 0.5 EI. Put value of theta B, that is nothing but 17.15 divided by EI. EI will be cancelled out. Yes or no? This EI cancel out. What will be value of MAB? Minus 11.425. Yes, minus 11.425 kilonewton meter. मोमेंट है इसलिए यूनिट रहेगा. Similarly, MBA should be equals to plus 20 plus EI theta B, plus 20 plus EI multiply by theta B, 17.15 divided by EI. So we will get one more value, that is nothing but 37.15. Yes or no? 37.15 kilonewton meter. Similarly, MBC, that should be equals to, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा देखिए, minus 60 plus EI just a minute, minus 60 plus 1.333 EI. What is value of theta B? 17.15 divided by EI. Please tell me what is the value of MBC? Minus 37.19. Minus 37.19. Now 19. just compare MBA and MBC. What is the value of MBA? 37.15 and MBC 37.19. It is close to each other. Yes or no? It is very close to each other.
है ना? It is Yes, close sir. to each other, so we can say that your calculation should be a right one. Okay, आपका calculation सही है ऐसा बोल सकते हैं. Okay, actually your value will be a 37.139 if I am not wrong. 37.139. Okay, so just near 15. Similarly, MCD that should be equals to plus 60 plus 0.667 multiplied by EI theta B. That is, I think, 71.44 or 439. Yes or no? 71.439. Please check it. Yes, sir. Okay, so this is a calculation of end moment. Now, next step, that should be same for each and every examples. Okay, so now in today's lecture, I will explain how to calculate support reaction and how to plot a shear force diagram and bending moment diagram. From now onwards, from next lecture, I will not discuss that part. Fine, chalega, because that procedure will remain same for each and every example. Fine now. So in today's example, we will discuss entire process. And if once you have a calculated end moments, calculation process for support reaction and shear force diagram and drawing a shear force diagram and bending moment diagram will remain same. Clear? So in today's lecture, we are going to discuss entire process. From next lecture, you have to calculate by yourself. This value will be a 20 kilonewton meter given in data. This is the point load, that is 40 kilonewton. This is A, this is B, this is C. Length is also given 2 meter, 2 meter, 6 meter. Okay, this is a D point. Now, just put all the values which is already calculated. What is MAB? Minus 11.425. Minus, that's the reason anti-clockwise. Now, what is MBA? MBA 37.15 plus. That's the reason I have mentioned here plus sign. $37.15. Okay, this is also 37.15. Due to space limitation, I am not writing here any unit. If you are solving the problem, if space is available, you can write a unit kilonewton meter. Just see MBC also 37.15, 37.139. That means 37.14. That is nothing but 37.15. And MCD is a 71.439. I hope it is clear to all of you. Plus इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे. Is it clear, students? Please confirm me. इतना clear है? Yes, sir. Okay, now we are interested to calculate a support reaction. चलिए, let we calculate support reaction. This is suppose VA. This is suppose VB, and this is suppose VC. Okay, so for that, first of all, we will calculate sigma Fy equal to 0. That is nothing but algebraic summation of all force in y direction. Fine. So starting from left side, VA is going in upward direction. For calculation of this, upward force will be treated as positive and downward force will be treated as negative. So plus VA minus 40 plus VB minus, we need to convert this uniformly distributed load into point load. That is nothing but 20 into 6. I hope all of you are knowing these calculations. Plus VC, that should be equal to 0. So we will get one relation, VA plus VB plus VC. That should be equals to
20 into 6. 120 plus 40. Our total load acting on a beam, that is a 160 kilonewton. Yes or no? Say equation number A or 1. Okay. Now take a moment about point B. Now question is that in mechanics of solid we have calculated a support reaction by taking a moment about any point and calculate the support reaction. Now but suppose what we can do, we will take a moment about point C. If we are taking a moment of all the forces about point C and we are trying to write an equation, we will get two unknowns V and VB. Yes or no? Yes or no? We will get two unknowns. Suppose we are taking a moment of all force about point C. Point C पे हम सभी force की moment ले रहे हैं. So in that case, we will get VA and VB as a part of unknown in second equation, and we have a three unknown in first equation. So we have a three unknown and two equation. It is not possible to solve. So for a such kind of structure, what we will do, we will take a moment about B, LHS. Okay. हम joint B पे moment लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके, जॉइंट बी पे सेक्शन कट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी दिख रहा है उस that all forces or moment will be considered. So from left side, now for this calculation, anti-clockwise on left side should be negative and clockwise on left side should be positive. Similarly, I am writing here in general term. Suppose we will cut a section, okay, left and right. On left side, clockwise moment is a positive, anti-clockwise moment is a negative. On right hand side, anti-clockwise moment is a positive, clockwise moment is a negative. Okay, it will be applicable for each and every problem. Now let me calculate moment about B on LHS. Left hand side पे हम moment ले रहे हैं, यानी कि we will cutting a section about just this point. So on left side, starting from point A, VA into 4. What is the direction of moment? Tell me. कौन सा direction आएगा, clockwise या anti-clockwise? Anti-clockwise. Just a minute. Now, to decide the direction of moment, suppose we are interested to take a moment about this point. Suppose this is a P force. Suppose this is a Q force. This is the A distance and this is the B distance. We are interested to calculate moment about O. Now, we are interested to calculate moment about O due to P force. Now, please tell me what is the direction of P force, upward or downward? P force का direction कौन सा है, upward या downward? कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? Downward. ओके, फोर्स आपका जो भी डायरेक्शन में लग रहा है, in whatever direction your force is applied, extend imaginary in that direction, fine, and rotate arrow of the force about a point which we are interested to take a moment. Now tell me what is the direction of your moment? Anti-clockwise. Negative, sir. Okay, fine. Negative. So this is, yes, negative. Similarly, take a moment about O due to Q force. In which direction Q force is acting? Tell me. Upward. Upward. So we will extend Positive. imaginary that force in upward direction and rotate that arrow about point O. Which direction will be there? Negative. नहीं, that clockwise, anti-clockwise बोलिए. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Fine ना? It is clear or not? Please confirm me. Again, Yes, sir. minus Q into B. This is simple explanation of moment. How to decide direction of moment. Now all of you are able to understand कैसे moment का direction decide कर सकते हैं? Yes or no? Now Yes, sir. question is that one force is acting in downward direction and another force is acting in upward direction. Why both moment will be a negative? ऐसा question हो रहा है ना? Yes or no? अभी तक तो ऐसा हम पढ़े थे कि भाई अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा या डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ऐसा कुछ याद रख दिया था? यस और नो? यस और नो? keep in mind direction of moment is depend on at which point or at which location you are taking a moment. Okay, उसके ऊपर डिपेंड रहता है. Fine, both forces having an opposite direction, but we are taking a moment about O. Okay, your force is on left side of point O and we are taking about point O from right hand side of the force. So it is we can't say that your upward force always give a clockwise moment or your downward force always give anti-clockwise moment. Okay, ये निकाल दो दिमाग से भी. Is it clear why I have explained this thing? Yes or no? Yes, So sir. now Clear. onwards you have to decide direction of moment by
imaginary extension of the force in upward or downward direction, whatever direction is given, right? So now let me calculate again. Just see here. Now tell me what is the direction of VA force about point B. Imaginary extend that force in upper direction and give me direction. चलिए अभी कौन सा डायरेक्शन आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ. दिस इज योर पॉइंट बी इमेजिनरी. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. दिस इज योर VA फोर्स. नाउ टेल मी, सपोज वी आर एक्सटेंड दिस फोर्स इन अपर ये डायरेक्शन. clockwise sir. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise, a clockwise. Clockwise. Okay, now we are considering with which side, left or right? Left वाला side consider करें. For left side, clockwise moment will be a positive, so we can write like this: VA into, or is it clear or not? Please confirm. इतना clear है? Yes sir. Now, what is the nature of the moment at A? Anti-clockwise, yes or no? 11.425. That is anti-clockwise nature. Yes or no? Minus. Now, students, please clear here. What is the value of M? Maybe -1. Yes or no? So now no need to place sign here. We have reflected that value by anti-clockwise nature. Now, sign convergence of bending moment will reflect plus and minus. Now, on left hand side, anti-clockwise is negative. That's the reason this anti-clockwise will be treated as now negative. Is it clear? Please confirm me. Yes sir. चलो, next force is a 40 kilonewton. यहाँ पे लग रहा है. Now take moment about B. Extend in downward direction. Rotate about B. Which direction will be there? Tell me. Anti-clockwise minus. That's the reason negative. Yes or no? Yes, 14 sir. to 2. I hope it is clear to all of you. Now, just simple. The question is that 37 point B पे हमको दो मोमेंट लग रहा है. 37.15 लेफ्ट साइड और राइट साइड. कौन सा मोमेंट हम कंसीडर करेंगे? We are interested to see a joint B from left side. Okay, so we cut a section at joint B just near a B. So लेफ्ट वाला मोमेंट लेफ्ट वाला पार्ट में ही दिखेगा और राइट वाला मोमेंट राइट वाले पार्ट में ही दिखेगा. Is it clear? So again, its value is a clockwise. That's the reason positive. 37.15. That should be equal to 0. So now tell me, on left side we are able to see VB force. VB के वजह से B point पे कोई moment आएगा? Tell me. Due to VB force, is there any moment on B point? Tell me. What is the definition of moment? Force multiplied by perpendicular distance. Yes or no? ये तो आपको ये फंडा तो क्लियर है आप सबका. प्लीज टेल मी, इतना क्लियर है? मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस और नो? चलिए अभी थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं. मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फोर्स चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर बाद में देखते हैं. यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी. Yes, Yes sir. ओके, नाउ जस्ट विजुअलाइज. VB फोर्स कहाँ पे लग रहा है? एट विच लोकेशन VB फोर्स इज एक्ट? ऑन पॉइंट बी. यस और नो? पॉइंट बी पे ही लग रहा है. Is there any distance for VB force on B? Distance available है? Tell me. कोई distance available है VB force के लिए B point पे? yes, sir. Yes or no? Yes. कहाँ पे distance है? Point B पे ही force लग रहा है. Distance तो 0 बोल सकते हैं ना. Point B पे ही force लग रहा है VB, तो VB point का reaction है. Is there any distance? कोई डिस्टेंस अवेलेबल है? नहीं है. तो VB की वजह से B पे कोई मोमेंट नहीं आएगा. कीप इन माइंड, टू कैलकुलेट मोमेंट यू मस्ट हैव अ डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो मोमेंट कैसे आएगा? इज इट क्लियर? क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी. Yes sir. Clear. राइट. ओके, कीप इन माइंड हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. चलिए उसका कंसेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा. व्हाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस? डोंट वरी. क्यों मैंने परपेंडिकुलर वर्ड पे ज्यादा फोकस किया, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA. कितना वैल्यू आएगा? टेल मी. चलिए 13.57 sir. yes, 13.57. Please confirm other students. I hope it is clear to all of you. Now we are interested to other reactions. Now चलिए same way what we can do, we will take now we have two possibilities. First possibility is that
we will take a moment of almost about point C. Now as we have discussed, if we are taking a moment about point C, VC का कोई moment आएगा C पे, tell me. VC का कोई moment आएगा C पे, tell me. अभी आप लोगों को पता है, बताइए चलिए. Yes or no? VC के वजह के C पे कोई moment आएगा? नो सर, कोई मोमेंट नहीं नहीं आएगा. आएगा, राइट, क्योंकि वही लोकेशन पे लग रहा है. बट if we are plotting, we are writing the equation for moment about C from LHS, we will get VA and VB in equation, yes or no? And we have already calculated VA, so from that you are able to calculate VB, right now? Okay, so and another thing is that same way we will take a moment about B from RHS. B की right hand side से moment ले रहे हैं, ठीक है? So now for right hand side we have this sign conjugation. Okay, right hand side anti-clockwise, positive, clockwise, negative. Keep in mind. So starting from point C, okay, VC into 6, that is anti-clockwise, yes or no? Extend in upper direction, rotate about C, yes or no? Anti-clockwise, right hand side, that's the reason positive. I hope it is clear. 17.49 is a clockwise nature. Right hand side clockwise is negative, that's the reason minus 71.439. Now we are interested to take a moment of this uniformly distributed load. Okay, now this uniformly distributed load is acting in downward direction. Is it clear? ऐसे downward direction में लग रहा है. Okay, उसका value say length is L and value is W. So now first of all, to take a moment of uniformly distributed load, you have to convert this UDL into point load. That is nothing but W into L. Load into length occupied by the UDL. Now this W into length L will be at a center of length of UDL, that is nothing but L by 2. I hope it is clear. Now apply this concept. Okay, now again your load is acting in downward direction and we are interested to take a moment about point B. This is suppose this location. Extend arrow in downward direction, rotate that arrow about that point, we will get a clockwise direction. That's the reason minus moment aayega. Minus, first of all, convert UDL into point load, that is nothing but 20 into 6. This load will be act in between B to C, that is nothing but 3 meters from B point, yes or no? So in same case, this distance will become 3 meters. So now we have to consider this 3 meters as a distance, L by 2. Okay, multiplied by length, that is nothing but 3 meters. I hope it is clear to all of you. This is the concept of mechanics of solid. Clear है? पता चला क्या किया हमने? And anti-clockwise acceleration plus. I hope it is clear. इतना clear है. Plus 37.15. That should be equal to 0. Please tell me what is the value of VC. So 65.71. Yes, 65.715 kilonewton. Now we have already calculated VA and VC. From VA and Sir, VC, question पूछूं sir? just a minute. Can I complete my explanation first of all? Okay, sir. Okay, right. Can we put a value of VA and VC in equation number 1? We are able to calculate VB. Yes or no? Yes or no? VB मिल जाएगा. So VB is nothing but put value of VA VC in equation number 1 and calculate it. We will get VA. Sorry, VB. Please tell me what is the value of VB. आ रहा है 80.715. Tell me. हाँ, 18.715. Clear? चलिए. What is the question? Please ask me. सर ये हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया VB का, VA निकल गया 13.57. Yes. तो VB का B पॉइंट का हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेशन किया, तो फिर इसमें से हम लोग BB तो ऑटोमेटिक निकल सकते थे ना सर. 40 टोटल लोड है, तो VA अपने पास 13.57 है, तो VB इज इक्वल टू 40 माइनस 13.57, तो VB तो निकल जाता. कितना आंसर आता है? तो हाँ, कितना आंसर आएगा? मतलब VB इज इक्वल टू 40 माइनस 13.57, तो अपना हो गया. चलिए कोई बात नहीं. आप जो समझ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ,
ठीक है. Suppose I am consider only AB span. This is your fixed support. Okay. Whatever load is given. Fine. आप ऐसा ही बोल रहे हो ना, ये स्पान कंसीडर करके VA प्लस VB करके हम VB निकाल सकते हैं. फाइन ना, ऐसा ही बोल रहे हो. हाँ सर. Now if we are considering this alone, what about CB span और BC span? यहाँ पे भी VB का रिजेक्शन तो आएगा ही ना. तो चला क्या बोल रहा हूँ मैं. बट सर इसमें तो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट के ऊपर में AB को हम लोग कैलकुलेट करें, AB के ऊपर 40 टोटल 40 है, तो 40 जो लोड है वो AB में डिवाइड होगा ना सर. नहीं ऐसा नहीं बोल रहा. 40 आप क्या बोल रहे हो, ओनली फॉर 40, बट व्हाट अबाउट 20 किलोमीटर मीटर UDR, उसका भी लोड बी पॉइंट पे नहीं आएगा. ओके. हाँ ओके सर. ओके. तो उसके लिए आपको ना, आपने जो बोला वो सही है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली BC स्पान भी लेना पड़ेगा. BC स्पान के हिसाब से आपको VB कैलकुलेट करके दोनों का हमें दोनों ऐड करना पड़ेगा फिर से, दोनों ऐड करना पड़ेगा. अभी इसका जरूरत है करके मैं 40. हाँ क्योंकि हाँ यस योर आंसर विल बी सेम. नाउ इज इट रिक्वायर्ड? अभी इसका कोई जरूरत है नहीं सर. ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट मेथड आपको सिखा दिया, आप ऐसे कैलकुलेट करो. ओके सर. एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी मेथड, नॉट ओनली फॉर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. वंस यू गेट अ मोमेंट यू आर एबल टू कैलकुलेट रिएक्शंस. राइट. चलिए, लेट मी ड्रॉ अ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. हम शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं. To draw shear force diagram and bending moment diagram, also write the value of reactions in diagram. VA is nothing but 13.57. मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आपको यूनिट लिखना है एग्जाम में. ठीक है. VB 18.715 and VC equals to 65.715. I hope it is clear to all of you. Now to plot a shear force diagram, we will draw an arbitrary diagram, shear force diagram. Okay, VA is now to plot a shear force diagram. Above the line that will be positive, below the line that will be negative. Fine. And upward force will be considered as a positive one for drawing a shear force diagram, and downward force will be considered as a negative one for drawing a shear force diagram. So tell me, what is the direction of VA, upward or downward? Upward, sir. Upward. Now for an example, okay, listen to me very carefully. For an example, during calculation, if your VA is a negative one, is there any changes are required? First of all, tell me. Suppose at the end of calculation VA का value negative आ रहा है. In that case, is any changes will be required in your calculation? Downward रहेगा sir. Yes. VA downward रहेगा. Yes. Actually हमने VA, VB और VC assume किया है कि वो upward direction में आ रहा है. Fine. Suppose आपका VA का value negative आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? ये साइन को, ये बीम को दोबारा ड्रॉ करना है, सभी रिएक्शंस और मोमेंट्स उसमें दिखाना है, और VA का वैल्यू डाउनवर्ड दिखाना है. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी. क्लियर. लेकिन अपने इन अवर कैलकुलेशंस और डायरेक्शन साइन, ऑल साइंस आर पॉजिटिव. देखिए VA पॉजिटिव है, VC भी पॉजिटिव है, VB भी पॉजिटिव, यानी क्या हमारा एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन करेक्ट है. दैट्स द रीजन देयर इज नो नीड टू चेंज द डायरेक्शन. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, VA will be up upper direction. That's the reason upper जाएंगे हम. That is 13.57. Random मैंने ड्रॉ किया है. Now in between A to D there is any load. A से D में कोई लोड है? In between A to D there is any load? Tell me. No sir. नहीं है. Okay. If there is a no load between 2 points, your shape of shear force diagram will remain straight horizontal line. Okay. If you have any question why this, let me first of all explain this, complete this explanation. Okay, we will discuss later on. Fine. 13.57 ही रहेगा initially. Initial value आपका 13.57 रहेगा. Now we are at a point D. At point D we have already downward direction force. Yes or no? 40 kilonewton. Yes or no? So plus 13.57 minus 40 कीजिए, because आपका load downward direction में.
बोलिए कितना आंसर आएगा? 26.43 प्लस या माइनस? माइनस 26.43। यस, माइनस 26.40 माइनस है, इसलिए मेरे को लाइन के नीचे जाना पड़ेगा, रैंडम ड्रॉ करना है, कोई स्केलिंग नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए 13.57 और 26.43 का में कुछ चेंजेस है। 26.43 नेगेटिव है, इसलिए मैं नीचे गया हूँ। अगेन D2B में कोई लोड है नहीं है, दैट्स द रीजन वी आर गोइंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन योर इनिशियल वैल्यू माइनस 26.43, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। It may be possible I am not able to draw a exact straight line, but that is a straight line. 26.43. Okay, again at point B, point load which is acting in which direction? Tell me. Upward. Positive, So we need to direction. add this value in 26.43. So minus आपका इनिशियल वैल्यू कितना है? माइनस 26.43. यस और नो? सो माइनस में प्लस वैल्यू आपको ऐड करना है, माइनस 26.43 plus 80.715. Is it clear? Yes sir. You will get plus 54.285. ऐसे कुछ दिखा सकते हैं? 54.285. Now next point is the point C. So we are interested to calculate shear force at point C. For that we are what we will do, we will subtract. Why subtract? Because this UDL, uniformly distributed load, acting in downward direction, that's the reason subtract. Okay, we will subtract total load of UDL. What is the total load of UDL? Intensity of load multiplied by length covered by UDL. What is intensity of load? 20 kN meter, that is the intensity of uniformly distributed load, and length of UDL is a 6. So what we will do, plus 54.285 minus, ब्रैकेट में लिखना है आपको कैलकुलेटर में 20 into 6, ब्रैकेट क्लोज, you will get minus 65.715. Please tell me, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है? Yes sir. Okay, so this value will be a minus 65.715. Okay, so again, what is the value of point C? 65.715, and it is acting in upward direction. So we can say that our diagram is closed now. अपना डायग्राम क्लोज हो गया है. Is it clear? माइनस प्लस जीरो हो जाएगा. एक्चुअली जीरो नहीं है, हमारा डायग्राम क्लोज हो रहा है. So this is a positive, this is a negative, this is a positive, this is a negative. Now can anyone tell me ये पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर? नो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन से डायग्राम में आता है, पहले वो बताइए. बेंडिंग मोमेंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट में. हाँ, दिस इज अ शियर फोर्स डायग्राम. शियर फोर्स डायग्राम. हाँ, कौन सा पॉइंट बोलेंगे पता है? This is the point of zero shear or point of inflection. Clear? This is a point of zero shear. Point of, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख देना क्योंकि मेरे को यहाँ पे दूसरा वैल्यू लिखना है. Point of zero shear और point of inflection, PI. चलिए, now we are interested to calculate this distance and this distance. Okay, for that पहले यहाँ पे खड़े रहिए. उसकी आगे की वैल्यू कितनी है? 54.285. yes or no? Okay, so to calculate this value 54.285 divided by what is the value of UDL 20. Now ये क्या है? डिस्टेंस है. yes or no? yes or no? ये मैंने यहाँ पे जो प्लॉट किया है वो डिस्टेंस है. yes or no? प्लीज कंफर्म. ये डिस्टेंस है ना आपका? यस सर. ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? यूनिट ऑफ लेंथ? yes or no? लेंथ का यूनिट होगा मीटर. हाँ, whatever unit of length. Now what is the unit of shear force? shear force का यूनिट फोर्स का यूनिट होगा. yes or no? ओके, shear force डिवाइड बाय UDL करते हैं. सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ, इसका प्रीवियस वैल्यू कितना है? 54.285. फॉरगॉट अबाउट वैल्यू. व्हाट इज यूनिट ऑफ 54.285? दैट इज किलो न्यूटन. एग्री विथ मी? प्लीज कंफर्म मी. yes or no? Students, please. 54.285, 13.57, 26.43, all having a kilonewton unit. Yes or no? Because this is shear force diagram है. पता चला क्या बोल रहा हूं मैं? अब तक आप ऐसा कुछ कर रहे थे, x l माइनस एक्स, ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं. ठीक है,
मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको. And what is the unit of UDL? That is kilonewton per meter. If we bifurcate this, what is your resulting unit? Meter. Agree है? Agree with me? Please confirm me. Agree हो आप सब? Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Okay, so what we will do now? जहां पे आपका शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, ओके, एट अ लोकेशन वेयर योर शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज, उसका प्रीवियस वाला शियर फोर्स का वैल्यू कंसीडर करेंगे. कितना है? 54.285 डिवाइड बाय यूडीएल का वैल्यू करना है. इट विल गिव दिस डिस्टेंस. क्लियर? सो आई एम ड्यू टू स्पेस लिमिटेशन I will writing direct value here and calculation will be given below. Okay, so this distance is nothing but मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 54. आप वहां से कैलकुलेशन देख लेना. 54.285 डिवाइड बाय 20 कीजिए. कितना वैल्यू आ रहा है बोलिए. चलिए 2.71. 2.714 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है मीटर. टोटल लेंथ कितना है? 6 मीटर. -6 कर दीजिए. You will get remaining portion, that is nothing but 3.286. I hope it is clear. Clear है? Please confirm me. इतना clear है? Okay, now let me draw a bending moment diagram. चलिए हम bending moment diagram plot करते हैं. Now, all students are requested to writing down this equation in your notebook. ओके, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप नोटबुक में लिख दीजिए. 2.714. बेंडिंग मोमेंट एट x, that should be equals to bending moment at previous point plus or minus area of shear force diagram between x to previous point. क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज कंफर्म मी. ये इक्वेशन आपके नोटबुक में आप लिख दीजिए पहले. ओके, हाउ टू अप्लाई दिस इक्वेशन आई विल एक्सप्लेन इन दिस एग्जांपल and next example in very depth. Okay, so from that you are able to apply this equation in each and every example. Now it is not there is no necessity to give a calculation of bending moment. Okay, once you are familiar with calculator, you can directly calculate in your calculator and draw a bending moment diagram. चलिए ए पॉइंट पे मोमेंट कितना है? टेल मी. पॉइंट ए पे मोमेंट कितना है? एंटी क्लॉकवाइज 11.425. यस और नो? यस और नो? तो कैन आई राइट हियर बेंडिंग मोमेंट एट इक्वल्स टू -11.425 किलोन्यूटन मीटर. इतना क्लियर है? प्लीज कंफर्म स्टूडेंट्स. माइनस है इसलिए मैं लाइन के नीचे से स्टार्ट करूंगा. Okay, 11.425. Now what is the next point after A in diagram? Tell me. A के after A point we have a D point. Yes or no? Please tell me. In your diagram after point A, that is a D point. Yes or no? Okay, so we will apply same equation for point D. We will apply same equation for point D. Bending moment at D equals to. Now apply this equation. What is equation? Bending moment at x equal to bending moment at previous point plus or minus area of shear force diagram between x to previous point. Now x is the point where we are required to calculate moment. Okay, x is the location where we are required to take a moment. So in this equation put x equals to d because we are interested to calculate moment at d. So d का previous point कौन सा है diagram में? A. Yes or no? A is your previous point. So we can rewrite this equation like this. Bending moment at A प्लस और माइनस लिखिए जैसा यहाँ पे लिखा है प्रीवियस पॉइंट ए प्लस और माइनस एरिया ऑफ एसएफडी, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम दैट इज नथिंग बट एसएफडी डायग्राम बिटवीन डी टू ए. यस और नो? सो बेंडिंग मोमेंट एट डी. नाउ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट ए का मोमेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. विच साइन अप्लाई कीजिए? -11.425.
Now what is the nature of shear force diagram between A to D, plus or minus? Tell me. shear force का एरिया कैसा है, प्लस है या माइनस है? यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट इज क्लियरली विजिबल। टेल मी, प्लस या माइनस, बोलिए। प्लस। प्लस है, प्लस हो तो प्लस लेना है, माइनस हो तो माइनस लेना है। प्लस है इसलिए प्लस प्लस लिखा है। नाउ टेल मी, कैसा शेप दिख रहा है आपको? शेप कैसा दिख रहा है आपको shear force का? ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। उसका हाइट कितना है? 13.57। लेंथ कितना है? 2। तो लिख सकता है 13.57 into 2। यस और नो? पता चला क्या किया हमने? कीजिए कैलकुलेटर, आंसर दीजिए। 15.57 15.712 सर। Yes, 15.712 15.715. Okay, 15.715 kilometer meter. Okay, don't worry if you are not able to understand. We are going to calculate each and every points. Now, next point is B. Yes or no? Next point will be B. So we will apply same equation for point B. Now we will apply same equation for point B. चलिए, bending moment at B. Now from diagram, what is the previous point of B? Tell me. B का previous point कौन सा है? D वाला consider करेगा, A वाला consider करेगा? Question is that. चलिए बताइए मेरे को, B का previous point आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? D या A? डी। D. Okay, आपको D point ही consider करना है, A point consider नहीं करना है. Keep in mind. Apply bending moment at D. चलिए, यहाँ पे ये इक्वेशन भी आपको बारंबार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं। ओके, आपका प्रीवियस पॉइंट कौन सा है? चले, फर्स्ट वाला है टाइम है इसलिए हम लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी, प्लस और माइनस एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन डी टू बी, ऐसा बोल सकते हैं एज पर दिस इक्वेशन। सो लेट मी कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट बी। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट डी वाला मोमेंट, तो प्लस 15.715। ओके, हम डायग्राम में भी दिखा देते हैं। इन बिटवीन ए टू डी कोई लोड नहीं है, इसलिए हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों हम इंक्लाइन करेंगे मैं बाद में आपको दिखाता हूं। दैट इज द वैल्यू 15.175 प्लस है, इसलिए हम लाइन के ऊपर गए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन बी टू डी? टेल मी, प्लस और माइनस। ये वाला एरिया कैसा है? माइनस है या प्लस है? माइनस है, तो आपको माइनस कंसीडर करना है। ठीक है, so we will consider here minus. What is area again? आपको रेक्टेंगल ही दिख रहा है, yes or no? आपको रेक्टेंगल ही दिख रहा है, तो 26.43 into 2। बताइए कितना वैल्यू आएगा? माइनस 37.415। yes or no? माइनस आएगा, माइनस 37.415, सॉरी 145। यस और नो? सो माइनस है इसलिए हमको लाइन के नीचे जाना पड़ेगा। अगेन कोई लोड नहीं है, इंक्लाइन लाइन आएगा। 11 से ज्यादा दिखाना है वैल्यू आपको, ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, माइनस 37.415, सॉरी 145। सी हियर, व्हाट इज द वैल्यू एट पॉइंट बी, लेफ्ट एंड राइट? 37.15। यस और नो? यस और नो? 37.15 वैल्यूज मैच हो रहे हैं। दिस इज द क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फाइन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम में कौन सा है? एक्चुअली बीम में सी पॉइंट है, लेकिन आपके डायग्राम में पॉइंट एक्स इज योर नेक्स्ट पॉइंट। यस और नो? एग्री हो आप सब? This x point is your next point. So we are required to first of all calculate moment at this point, and then we are going to calculate moment at C point. So first of all, we will calculate bending moment at x point. That is nothing but previous point आपका B है, plus or minus area of shear force diagram between x to B. सो अगेन हमने बी का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस 37.145। आपका एरिया कैसा है एक्स टू बी का? टेल मी, एरिया का साइन कैसा है? प्लस है या माइनस है? टेल मी, बिटवीन एक्स टू बी, दिस इज योर एक्स पॉइंट। प्लस सर, प्लस है, इसलिए हम प्लस कंसीडर करेंगे इस टाइम। ठीक है,
चलिए, एरिया का शेप कैसा दिख रहा है आपको? एरिया का शेप कैसा Triangle. दिख रहा है? ट्राइंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यस और नो? 1/2 54.285 मल्टीप्लाई बाय 2.714, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 54.285 मल्टीप्लाई बाय 2.714, $36.519 sir. जस्ट मिनट, Plus. प्लस 36.52, ओके 36.52 प्लस, Plus 36.519. हाँ. ओके चलेगा, 52 519 दोनों चलेगा, ठीक है। किलोमीटर मीटर, मैंने 3 डिजिट कंसीडर किया, इसलिए ये मेरा वैल्यू राउंड अप होके आ रहा है, ठीक है। आप एक बार बाद में आपका कैलकुलेटर 3 डिजिट में फिक्स कर देना। नाउ इन बिटवीन B2X व्हाट इज द टाइप ऑफ लोड? टेल मी, कैसा लोड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट्स द रीजन योर शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी अ पैराबोलिक कर्वेचर, ऐसा आएगा। क्लियर? 36.52 प्लस आएगा, इसलिए लाइन के ऊपर है हम, माइनस प्लस माइनस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट C, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मोमेंट एट C, सेम इक्वेशन विल बी अप्लाइड। आपको यहां से यहां पे जाना है, बाद में यहां पे आना है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट C, प्रीवियस पॉइंट आपका B है या X है? टेल मी, प्रीवियस पॉइंट आपका B है या X है? टेल मी। X सर। X है, तो आपको X का वैल्यू ही कंसीडर करना है। बेंडिंग मोमेंट एट X प्लस और माइनस एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन X C2X। आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, ये X, सो हमने X का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट निकाल के रखा हुआ है 36.52। आपका शियर फोर्स कैसा है, प्लस है या माइनस है? अभी टेल मी, बताइए। Minus. माइनस है, इसलिए आपको अभी माइनस लेना है, ठीक है। माइनस, अगेन ट्राइंगल है, 1/2 65.715, 1/2 65, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 65.715 मल्टीप्लाई बाय 3.286, व्हाट विल बी योर वैल्यू? टेल मी, आपका वैल्यू कितना आएगा? 71.45. 58 71.45. जस्ट मिनट, 71.45 प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस। माइनस, sir, ठीक है, minus. माइनस 71.450 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है मेरे को, ठीक है, किलोमीटर मीटर। तो अगेन 71.450 माइनस है, इसलिए मेरे को लाइन के नीचे जाना पड़ेगा। सो लेट वी विल शिफ्ट टू बिलो द लाइन। ऐसे वैल्यू आपको दिखाना है कि ये वैल्यू आपको 37 से ज्यादा दिखे, ठीक है, मैथमेटिकली। सो दिस इज 71.45। Now tell me what is the value of moment at point C? 71.439, yes or no? 71.439 जितना वैल्यू है, जस्ट नियर आ रहा है, एग्री हो आप सब? ठीक है ना, जस्ट नियर आ रहा है ना? टेल मी स्टूडेंट्स, प्लीज बी एक्टिव इन लेक्चर। Yes sir. ओके, सो वी कैन से दैट आवर वैल्यूज आर मैचिंग हियर। आपका वैल्यू मैच होना चाहिए। सपोज यहाँ पे वैल्यू आपका 71.439 है और यहाँ पे आपका वैल्यू 71.3 आ रहा है, तो इतना इतना टॉलरेंस चलेगा, ओके, 0.15 जितना टॉलरेंस चलेगा, ओके, बिकॉज व्हाट हैपन समटाइम we will consider 3 digit in some points and sometime we will consider 2 digit in some points. In that's the reason we will not get an exact value, right? So इतना टॉलरेंस चलेगा। नाउ दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज योर नेगेटिव। नाउ अगेन क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे तो क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिख रहा है? यस और नो, ऐसा क्वेश्चन होगा ना?
यस और नो? यहाँ पे तो क्लॉकवाइज मोमेंट है, एमसीबी तो अपना पॉजिटिव मिला है, लेकिन यहाँ पे हमको नेगेटिव क्यों दिख रहा है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. All right. Okay, now just put a point at C, section at point C, and visualize that this moment will be actually left side or right side. यहाँ पे मैंने थोड़ा दूर दिखाया है, लेकिन एक्चुअली ये मोमेंट लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? 71.439। यहाँ पे सेक्शन कट कर दीजिए, तो ये मोमेंट एक्चुअली आपको लेफ्ट साइड दिखेगा या राइट साइड दिखेगा? पॉइंट सी पे लग रहा है। टेल मी। पॉइंट सी का लेफ्ट साइड में सर। हाँ, पॉइंट सी, सॉरी, राइट साइड पे दिखेगा, क्यों लेफ्ट साइड पे दिखेगा? एक्चुअली आपका ऐसा जंक्शन है, दिस इज योर पॉइंट सी, ठीक है? यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे मोमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कैलकुलेशन, ठीक है? यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट सी पे लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं सेक्शन कट करूंगा तो ये मोमेंट मेरे को राइट साइड दिखेगा ना? यस और नो? So now just see sign convergence of bending moment. What is the moment on right side clockwise? Negative. Yes or no? Yes, sir. Now all of you are able to correlate this value. Why this is a negative one? अभी आप लोग correlate कर पा रहे हो, ठीक है? Now question is that मैंने ये डायग्राम क्यों प्लॉट किया? राइट, एक ऐसा क्वेश्चन होगा। आपने आप सब लोग साइड पे हो, ठीक है? इट मे बी पॉसिबल, might be you people having a more knowledge than me for a construction aspect or drawing reading aspect. आप सबके पास ऐसा बीम आता है क्रॉस सेक्शन में और एल सेक्शन में, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में, यस और नो? इन ड्राइंग एग्री हो आप सब? यस सर। ओके, सुनाओ। और ऐसे रेनफोर्समेंट रखे हुए थे थ्रू आउट द स्पान, यस और नो? यस और नो? एग्री आप सब? ऐसे पहले तो मिनिमम स्टील रखा हुआ रहता है, बाद में सपोर्ट पे बेसिकली टॉप पे स्टील रखते हैं मेजोरिटी केस में, यस और नो? यस और नो? ये सपोर्ट पे भी टॉप में स्टील रखते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन यहाँ पे इंटरमीडिएट जंक्शन है, वहां पे ऐसे स्टील रखते हैं। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे स्टील रखते हैं, यस और नो? ऐसा कुछ डायग्राम होता है आपके पास, यस और नो? एग्री हो आप सब? This is not a fit to fit diagram. This is a rough diagram. Now, just consider simply supported beam. Okay. Why are you plotting that diagram? Suppose we are considering simply supported beam and we are applying load like this, random shape. Okay. So your beam is like to deform like this. Yes or no? तो स्पंज ले लीजिए, आपके घर में जो सोफा यूज होता है उसका स्पंज ले लीजिए, उसको ऐसे ग्रिड ड्रॉ कीजिए स्केच पेन से। Now apply load on that. You people are easily able to see the deform shape, yes or no? Deform shape आपको easily visualize होगा। Now in that case we are easily seen that your topmost fiber, ये आपके fibers ऐसा सोच लीजिए, okay? अलग अलग layers को मैं fibers बोल रहा हूँ, that is under a compression because उसका length decrease दिख रहा है, और bottom वाला जो portion उसका length increase हो रहा है, yes or no? Clear visualize हो रहा है यहाँ पे, yes or no? So we can say that is in a tension, yes or no? Tension. Yes, sir. Okay, so on a simply supported beam, that is a compression and tension. Now we are not merging like remember like compression and tension, but whenever your negative sign will be there or whenever a positive sign will be there, negative will basically treated as a compression and positive will be treated as tension, yes or no? And all you people are knowing that your concrete is a weak in tension, yes or no? आपका concrete tension में weak है. Now I hope all of you are able to correlate that this is a negative sign. So in this case, you will require steel, yes or no? Clear है ना? Yes, sir. I hope it is clear to all of you. Clear? चलिए, फाइन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सपोज आपको ऐसा डायग्राम प्लॉट करना नहीं आता है, ओके? So in that case, what you can do? There is also one more diagram. If you want to plot such a diagram, you can plot. We will discuss in next example. Okay? In next example, we will plot two diagrams. Fine.
Is it clear or not? Please confirm me. इतना clear है? Yes, sir. Okay. So now, Yes, sir. આજે આટલું રાખવું છે. Please tell me. From next lecture, we will boost up our speed. Okay, sir. બરાબર ને? Just કોઈ leave ના થતા 1 minute. Now, there might be some question in your mind. Okay. Regarding of the shear force diagram and bending moment diagram. Now, I have already shared YouTube links. Okay, so in that you people will find 3 playlists. One is mechanics of solid, another is SA1, and another is SA2. Okay, so now again, mechanics of solid is not your part of syllabus, but in mechanics of solid also already I have mentioned some of the videos. Right. So at least if you people are not able to understand type of support, types of load, or types of beam, later on I will upload here shear force diagram, bending moment diagram also. So please go through this recording once. Fine. So you people are able to understand which kind of suppose uniformly distributed load is given, how to calculate moment of that load. If suppose a point load is given, how to which points are to be considered to while drawing the shear force diagram and bending moment diagram. Fine. That's the reason I am also parallelly sharing the videos of mechanics of solid. Okay. Is it clear? Please confirm me. Yes, Yes, sir. क्लियर? तो यहाँ से आप एक बार देख लेना और पूरे वीडियोस डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको जो पता नहीं चल रहा है वही देखना है. आप थोड़ा ऐसा होगा तो जल्दी वीडियोस एक बार देख लेना. ठीक है. So it will ultimately help us in a next lectures for a smoothing of the lecture. जो आपको आपके दिमाग में जो डाउट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल हमने ये जो मेथड्स कैलकुलेट किया, एरिया वाला मेथड टू ड्रॉ ए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके, ये पूरा मेथड मैंने वहां पे स्पेसिफिकली कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्ट बीम के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, इफ यू आर simply calculate 1 or 2 example, you are able to calculate each and every example by this method. Fine. Clear? Is there any question?